Hello students. In 10th class, in the last video, we have studied about electromagnetic induction. In this, we have studied that till there will be a change in the magnetic field in a coil, in a conductor, there will be production of current in it. Production of current in it. And that direction can be judged by the Fleming right hand rule or either by the Lenz's law. Okay. So in our syllabus we have two electricity generators. One is the AC generator and second is the DC generator. Today we are going to discuss both. AC generator is also known as with the name dynamo. Okay. AC means alternating current. AC means alternating current, which produces the alternating current is called AC generator. In fact, it converts the mechanical energy into the electrical energy. Yes, it is based on the principle of EMI only. Whenever magnetic field changes in the conductor, induced current is produced in it. Current lasts till there will be change in the magnetic field in it. जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब तक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੰਟ बढ़ेगा. So in AC generator there are four basic parts just like a motor, only one change is there. Armature coil, this is A, B, C, D. ठीक है, this coil is of a insulated copper wire. Lot of number of turns we have taken in it. Magnets, two magnets, north and south pole is here. North to south is the magnetic field. Slip rings, this is the change here. These are the rings, slip rings. One just like one hollow ball you have taken, metal ball, and here is you have fixed and here is you have fixed, right? They are welded, AB with the first ring and CD with the second ring. These bumps shows that there is no touch between this ring and this bias. It is going in from in between. Then carbon brushes V1 and V2. V1 in a touch of R1 and V2 in touch of R2. They are not welded, and this galvanometer is there which will show the direction of a current. Right? That what is the direction of a current? Now see, just imagine with the force, AB arm is moving downwards and this arm upwards. See here, this is the AB arm and it is moving downwards, okay, this way. So this is the motion, anti-clockwise for me, anti-clockwise. So here with the Fleming left hand rule, the magnetic field is this side and force is down side, and my finger is same. This is the magnetic field and this is the thumb down side, it is going down, and this thumb and the middle finger is going this way, means current is this way and it is completing its circuits. This way you can see, this way it has completed this circuit. After 180 rotation, what will happen? AB side will reach this side and CD this side. That I have shown here, CD here, AB here. What the ring is at the same position, brush is at the same position, है ना? ये इस side आ गई, and ये वाली जो side है ये इस side आ गई, ठीक है, इधर आ गई. Okay. Now see, दोनों इस तरफ आ गई. अब क्या हुआ? ये वाली side तो फिर वही एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये हमेशा नीचे जाएगी. Then the currents again will complete circuit this way, and you can see now the current is entering after a half rotation from the opposite end in the galvanometer. पहले नीचे तो आई सी, अब ऊपरों आई है. Okay. What basically happens when this coil moves anti-clockwise? This AB side moves downwards and this upward this way, है ना? ये नीचे जा रही है, ये ऊपर आ रही है, इस तरह, right? When it will take 180 rotation, now CD is coming here, है ना? Then CD will move downwards. Okay,
then the direction of a current changes, and hence in galvanometer changes after a 180 rotations. Okay, and what is going on that this way, this is called one wave. In a lower classes you have studied about it, in a +1 class in detail you will study that 0 to 2 pi, this is the complete wave है ना। जब ये पूरा अपना 360 का रोटेशन ले लेगा, पाई मीन्स 180, तो ये पूरी वेव बनेगी। दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन, 180 रोटेशन तक आ डायरेक्शन है। आफ्टर 180 डायरेक्शन ऑफ अ करंट इज अपोजिट, नेगेटिव की तरफ हो गया। मीनिंग इज एक वेव ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ डायरेक्शन चेंज हुई है, एक ਇੱਥੇ डायरेक्शन चेंज होगी, दो बार डायरेक्शन चेंज होगी करंट ਦੀ। 180 रोटेशन च गैल्वेनोमीटर च जब तक ये इस पोजीशन च नहीं आता करंट इधर ही होएगा, जिमें इस पोजीशन च आ गया करंट जो ऊपरों चलूगा, दो बार डायरेक्शन चेंज हुई है, राइट। नो द करंट विच आर प्रोड्यूस्ड, the current which is produced in India by this process by the AC generators has a frequency 50 hertz. 50 hertz means in 1 second 50 waves. In 1 second 50 waves. 1, 2, 3, so on. In a 1 second there will be 50 waves. So one wave, in a one wave, 2 times direction is changing, means in 1 second there are 50 waves, means 100 times. 100 times there will be a change in the direction of a current. So this way, the frequency is 50 hertz. In a developed country like Britain, America, there is a AC alternating current of 60 frequency, 60 hertz, right? So this is all about AC alternating current. In this way, dynamo is telling after 180 rotations, there will be a change in the direction of a current. Okay, that is called AC generator. Now I am taking a DC generator, which is also known as DC dynamo. Same is the principle, same is the construction. Only one change is here, that here is split rings. Here is split rings, which are also known as commutators. Commutators. The same diagram I can use. This is the diagram. This is the one ring, this is the second one, like that, and this way. Okay, here is this is, right? This is the ring number 1, just like AB ring 1 let, and this is V1, this is R2, and this is P2. This is now, here is the brush. Here is a brush and a galvano is here. Now see, AB has R1 ring, AB is reaching this direction, then R1 will reach here and R2 here. Brushes are the same positions, and this is the galvano. Clear? Now see what is going on now. I am again telling A, B, C, D is the armature, north and south pole magnets. And these two are split rings. And I told you already in a electric motor that we have a hollow metal ball and we will cut from in between. They will become just like, right? And two brushes and a galvanometers. Okay. Now again, just imagine it is moving anti-clockwise. AB is downside, and the same will be the direction of a current, and you will see the current will flow this way. So galvanometer will say that the direction, that the right hand directions, right direction is here of galvanometers from this side if the current is entering, right? Now again, after 180 rotations, CD will reach here, same will be the direction of a current, and from this one, again in a galvanometer, even after 180 rotation, the current is entering from the same directions. इक्वल डायरेक्शन च बेटा करंट एंटर हो रहा है। क्यों होया देखो, पहले दे केस दे विच AC जनरेटर और DC की फर्क आया। इन DC, in this particular ring has changed their positions. R1 V1 दे कोल है, इथे B1 दे कोल R2 आ जाएगा, और as the coil continue will remain in rotation, the direction of a current will remain same.
मतलब सीधी इको ही डायरेक्शन होगी करंट, एक डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड डीसी जनरेटर बेटा, इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर, राइट। अब समझते हैं बेटा कि ये जो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर होता है ना, ये जो करंट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये करंट में क्या फर्क होता है, एसी और डीसी में फर्क क्या होता है, कहां कहां ये मिलते हैं, कहां कहां ये यूज होते हैं, एसी एंड डीसी। ठीक, नंबर फर्स्ट डिफरेंस, ये अपनी डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज करता है। ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल चेंजेस डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, नो चेंज इन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये एसी है और डीसी जो होता है वो ऐसे सीधा फ्लो करता है, राइट। ये कहां से मिलता है, अगर एसी करंट चाहिए आपको कहां से मिलेगा, एसी जनरेटर से, एसी का जनरेटर से। और डीसी कहां से मिलेगा, डीसी जनरेटर से, या सेल जो आपके घरों में यूज होते हैं, मोबाइल में, सॉरी रिमोट में, और आइदर इन एसी रिमोट, है ना, सेल और बैटरी, एंड देयर आर बैटरीज आल्सो व्हिच यूजेस डीसी, है ना। आपने इन्वर्टर लगाया ना घर में, बैटरी लगी हुई है, वो डीसी यूज कर रहा है, राइट। और इसका यूज कहां होता है, ये यूज होते हैं घरों में, इंडस्ट्री में, है ना। और ये कहां यूज होते हैं, ये यूज होते हैं आपके मोबाइल फोन्स में। मोबाइल में जो करंट जिससे वो चार्ज होता है ना बेटा, वो क्या होता है, डीसी होता है। टॉयज में, है ना, टॉयज जो आपके इसी करंट से चलते हैं, है ना। ये करंट जो होता है ये पुल करता है और ये पुश करता है, ये बड़ा बड़ा डिफरेंस है। अगर एक वायर है उसमें से करंट जा रहा है, आप हाथ लगा दो उसको, है ना, हाथ लगाओगे तो हाथ लगाने से ये आपको पकड़ लेगा और आपका खून चूस के जब तक आप मरते नहीं छोड़ेगा नहीं, पुल करेगा, पकड़ लेगा। लेकिन डीसी जो होता है वो धक्का देता है, आपका हाथ लग गया तो ये धक्का देगा ऐसे, है ना। ट्रैक्टर की बैटरी लगी होती है, वहां पे आपका हाथ लग जाए वायर के साथ तो वो आपको झटका देगा, दूर भेजेगा। तो ये हमें झटका देगा, झटका लग के कहीं सर लग गया तो मर जाएंगे, अदरवाइज नहीं मरने वाले, ये मार देगा। एसी जो है वो हमें मार देगा। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच बेटा।